Hi, everybody. I'm so very honored to be here. Everybody knows that I love fashion and I love all things luxury. And this is a beautiful association, I think. And especially because Versace is doing this for the first time in India. And I'm so happy that they're doing it with you, Mr. Bhosle. I think it's a great association because it's about quality. It's about having your own mansion in Bombay, which is completely, we don't have the space, right? So if you have a luxury apartment here, it's great. And I love being associated with something that's great quality as well. So I'm really happy to be here. I'm really happy to launch this project because it seems like it's one of a kind, and it seems like it's going to be a great step forward for luxury and property in India. So, yeah. So, and there are only 10 apartments, only duplex, which is great, and the price points are expensive enough that only the best and the creme of the people will be buying it, which is also brilliant. So, I'm happy, and it's on Hughes Road. So that's another thing. There's not much that is being built there, which is that luxurious. So I mean, I would buy it for sure. So, yeah. Am I your first customer? Yeah. So I'm really happy to be here, and it looks spectacular. Yeah. Thank you. सोनम, सबसे पहला सवाल कि आपका जो नाम है लग्जरी ब्रांड के साथ अब एसोसिएट होता जा रहा है, सिनोनिमस हो गया है सोनम कपूर और लग्जरी ब्रांड जो आप इंडोर्स करती हैं, और ये तादाद बढ़ती जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली मैं बहुत कम एसोसिएशंस करती हूँ, मैं बहुत सोच समझ के, बहुत नाप तोल के करती हूँ. तो अगर जो भी मैं करती हूँ तो आप यू बी रेस्ट एश्योर्ड कि आपको उसकी क्वालिटी से आपको कंप्लेन नहीं करना पड़ेगा. इसलिए आप जैसे आप कह रहे हैं, मेरा जो नाम है उसके साथ ही एसोसिएट हो गया है, और ये मेरे लिए भी अच्छी चीज़ है और ये ब्रांड्स के लिए भी करेक्ट चीज़ है. तो एक यू काइंड ऑफ ट्रस्ट द ब्रांड थ्रू देयर ब्रांड एम्बेसडर. आई थिंक ये जो एसोसिएशंस जो मैं करती हूँ इसलिए ही करती हूँ, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि मैं जा रही हूँ एंड if I'm associating myself or becoming the face of something, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि I don't want to seem like I'm selling something that I don't believe in. मैं झूठ तो अच्छा बोलती नहीं हूँ, आप सब जानते हैं. तो वो हो नहीं सकता. तो I do things which are in my comfort zone and which I understand and which I believe कि मैं अगर मुझे चांस मिले तो मैं वो प्रोडक्ट या वो प्रॉपर्टी या वो चीज़ मैं भी खरीद लूँगी. सोनम, ऐसे अक्सर कहते हैं कि घर सिर्फ चार दीवारी से नहीं होता है. इट्स लाइक इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. इट्स लाइक विद द परिवार. यू रियली बिलीव इन दैट इज व्हाई यू आर लाइक नॉट ट्राइंग टू जी, ये मेरी बिलीव है, पर आई नो कि मेरे जो बहुत सारी सहेलियां हैं, बहुत सारे जो दोस्त हैं, ये बिलीव उनकी नहीं है, स्पेशली क्योंकि वो बॉम्बे में रहते हैं. क्योंकि बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं इंडस्ट्री के, वो बॉम्बे के नहीं हैं, वो आते हैं मतलब ऑल ओवर इंडिया से, और कभी कभार दिल्ली से आते हैं, कभी बहुत सारे चंडीगढ़ से आए हैं. ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, पर बिलीव यू मी, दे रियली मिस देयर फैमिलीज ऑल्सो. तो अगर मेरे पास वो लग्जरी है तो व्हाई शुड आई डिसएसोसिएट विद इट. वो घर का खाना और इसलिए मैं वापस ABIL के वापस वहाँ जा रही हूँ. आई थिंक ये वो इंडियन माइंडसेट ये समझते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे ही डुप्ले अपार्टमेंट्स बनाए हैं जो विच इज़ सेफ फॉर द फैमिली ऑल्सो, एंड ऑल्सो इट्स दे आर लाइक ये घर ही बनाए, दे मेड मैंशंस ओनली, क्योंकि यू नीड दैट काइंड ऑफ स्पेस स्पेशली फॉर बिग इंडियन फैमिलीज़. हम एक साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली का एक ट्रेंड है, अब वापस आ गया है. इसलिए हमारी जो प्रेम रतन धन पायो है अभी, आई थिंक
मतलब वो भी फिल्म you know that ये there's a reason why films like that and places like this still sell in India क्योंकि ये हमारा culture है और ये culture is something very precious which we shouldn't let go of. I know a lot of my girlfriends are like यार अकेले it's very depressing to stay alone. You want to come back to something. Sonam, since you are present here and your name has been associated with the brand, so is it right to call you the brand ambassador of ABIL? And No, Versace? I'm just in association with them right now. This is one event that I'm doing with them. Let's see in the future what happens. Sonam, Like mostly, as you said, like it will be a totally the product is Versace actually. So now ABL, how does it like? How do you go about it? Like you're marketing the thing, or how are you totally also involved in the? As you said, like in your. So we are the developers. So we are the ones who bought the land. We have to work on getting the permissions which we have. We will have to now construct it. So we'll be responsible for quality, for timelines. So for execution, I mean, like Versace are the interior designers. कोई भी project आप hotel करो, residence करो, office करो, architects, interior designers, you have to hire a team. By the end of the day, we have to execute it. So we're like any other true developer where we've taken design from Versace, but we have to now, the real challenge is to be able to execute it in time and in a quality manner. सोनम, अभी बॉलीवुड सेलिब्रिटी लीग चल रहा है तो आप किसको बॉलीवुड क्रिकेट लीग चल रहा है तो आप कौन से टीम को सपोर्ट करना चाहेंगे? मुझे पता भी नहीं था कितने लीग्स आ रहे हैं यार. बहुत सारे चीज़ आ रहे हैं. मैं मतलब लॉस्ट ट्रैक हूँ. कौन कौन है? ओके, कैन यू गिव अ विश फॉर राउडी बैंगलोर टीम? नहीं यार, I don't know who's in it. Suppose I don't like the people associated with it. I'm not doing it. Sorry. Talking about Neerja, it has broken the opening record of other, women. The final record of it. Final But record. honestly, I hope another actress breaks it very very soon. I hope कि आज ये अगर मेरा रिकॉर्ड है, I hope कि इस साल या अगले साल कोई और या even me again, I hope that happens क्योंकि ये मेरे लिए ईगो ट्रिप नहीं है. मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरी फिल्म ने और फॉक्स स्टार ने और जो भी एसोसिएटेड हैं उन्होंने अच्छा मतलब it's been a venture that is been successful. पर ये जो है ये हाँ it's something to be proud of, but at the same time मुझे लगता है कि I hope somebody another female driven film breaks it very very soon क्योंकि अभी हमें पता चल गया कि मार्केट है इसका भी लोग इतने डरे हुए नहीं होंगे. And I hope there's more money invested in films like this, and I hope that the screen count increases next time I release a film or any other actress releases a film. अभी कौन सी फिल्म्स आ रही है? I think सोनाक्षी की कोई फिल्म आ रही है और सरबजीत आ रही है और कौन आ रहा है? It's fine, right? We can move it? You all have to just continue. Please go ahead. They're saying we need it. In between the thing we're not supposed to do, but it's okay. नीरजा के लिए आपको हाँ? सुनो अगर पूछा जाए नीरजा के लिए आपको वर्ल्ड और पूरे दुनिया से अच्छे कॉम्प्लीमेंट में सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको क्या लगा और डैड अनिल कपूर ने क्या कहा? अभी ऑनेस्टली मैं यहाँ हूँ इनके साथ तो बहुत ही रूड लगता है अगर मैं अपने बारे में इतना बात करूँ क्योंकि ये समय इनके लिए है और पर मैं बहुत ही खुश हूँ. लाइक आई सेड आई एम वेरी हैप्पी विद अप्रिसिएशन माय वे और जो अप्रिसिएशन मुझे मिला है भनोत फैमिली से वो मेरे लिए काफ़ी है. एंड वी शुड गो बैक टू टॉकिंग अबाउट ABI and Versace. I'm so sorry I can't do that. What is your idea of a dream home? What is my idea of a dream home? With my family and my dogs. Are pets allowed? Absolutely. Okay, great. As you know, in Europe, it's very that you give enough respect to the pets as well. Yes. So they're all over. You Yeah. go to malls, you go to restaurants. Yeah, so we So allow, while- we allowed, of course, right? of course. That's something missing in India. We cannot take them Yeah. in malls. and Malls, restaurants. restaurants, and you can't even sometimes some apartment complexes. Like I said, मैं 3 साल से ढूंढ रही हूँ. बहुत सारे they don't welcome pets. They don't. Yeah. They But that's again, it all comes back to limited number of people. So there's not too many people you have to deal with. Not too many people complaining. It's just 10 families. So it overall becomes a nice joint family. Just 10 of them living together. They in turn become friends themselves.
I think it's a great idea क्योंकि good बॉम्बे neighborhood. में we have this problem, we don't even talk to our neighbors. So how much of business minded kind of person are like? Do you feel your property is a very safer? and Yes, a- I'm half Sindhi, so I think that says it all. I believe in conservative investment. My grandfather was he was a banker and a very conservative one at that. So जो हमारी मेरी upbringing रही है where finance and investments are concerned, it's been to do sound conservative investments, and one of the most sensible investments to do is in property. Buying, selling, etc. etc. क्योंकि वो जो ये जो होती है वो एक tangible चीज़ होती है, ये आपके it's something that's very tangible, so it's the best thing to I think to invest in. Thank you. Any Hollywood offers you getting like? Which No. plans? Nisha's a Hollywood film. Thank you so much. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you everybody. Thank you. Thank Thank you. you. Thank you. For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.